Hello guys, what's up? I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS and here you can see me reading newspaper just before my UPSC interview, okay? So we have started this series Environment, Biodiversity and Climate Change. It is a very important series. UPSC जो है around 20% question इसी part से पूछती है. So in the biodiversity part, we will cover biodiversity conservation first, and in that in the previous video we covered about the tiger reserves in India, and today we will read about the biosphere reserves in India. Okay, so in the previous video we discussed that there are 50 tiger reserves in India. So 50 jo, this is a big number. When we talk about the national parks, they are around 100 or more than 100 national parks in India. So each and every national park या tiger reserve के बारे में information याद रखना इतना easy नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है. But when we talk about biosphere reserve, they are just 18 in numbers in India, okay, and among that 11 are recognized by Man and Biosphere Reserve Program, okay. So that becomes very important. So 18 or 11, this is not a big number, so we have to remember like every minute details about these biosphere reserves. What are they, what are their importance, what are their functions, etc. Okay, so first we will start with the definition of the biosphere reserve, that hote kya hai biosphere reserve. So biosphere reserve, they are areas, or we can say large areas covering both natural landscape as well as cultural landscape. Okay, so why this natural and cultural? It means that वहाँ पे vegetation भी होगी और जो है human habitations भी होंगे. Okay, so it includes terrestrial as well as coastal ecosystems, and it can also be a combination of these. Okay, then they are the living examples of human beings and nature, they can coexist. Okay, so we know that जो human being है, they have been living in the jungles and natural areas throughout their life, but in the just last few hundred years we have started thinking that कि हम जो है वो नेचर के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते. So this biosphere reserve program or the biosphere reserves, they are living examples of this, that yes, we can survive together. Okay, so these sites are established by countries. Okay, so जो biosphere reserves है उनको डिक्लेयर कौन करता है? इंडिपेंडेंट कंट्रीज या जो है डिफरेंट कंट्रीज. एंड रिकॉग्नाइज कौन करता है? इट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूनेस्को's मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम. ओके, so mark this word, this is important. It is recognized by UNESCO's Man and Biosphere Reserve Program. Okay, and what is its purpose? Its purpose is to promote sustainable development based on local community efforts in sound science. Okay, so scientific basis को use करते हुए जो sustainable development है of the local community, that is the main purpose of this Biosphere Reserve Program. It also seek to reconcile conservation of biological and cultural diversity and economic and social development. Okay, so we have on the one side natural conservation, on the another side we have economic development. So इन दोनों के बीच में जो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है through partnership between people and nature. So that is why it is very important. Okay, so UPSC asked this very simple question in 2014, that the most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life. Okay, so they are asking biodiversity और human life दोनों को conserve करने के लिए किस तरह की strategy अपनाई जाती है. Okay, so it is the establishment of biosphere reserve, botanical gardens, national parks या wildlife sanctuary. So I think easily we can answer that it is biosphere reserve. Okay, बाकी सब जो है वो they are for natural vegetation or the flora and fauna. Human element जो है इसमें नहीं होता है. Human element is there only in the biosphere reserve program. Okay, so this was a very simple, I think everybody would have answered that. Next is the what are the functions of the biosphere reserves. Okay, so we can divide them in three categories. One is regarding to the conservation of what? Conservation of landscapes, ecosystems, species and their genetic variations. Okay, they also encourage the traditional resource use system. Okay, because men, they are living with nature. Okay, so जो पुराने टाइम में इंसान होते थे उनको पता होता था कि जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनको किस तरीके से यूज़ करना है. फॉर एग्जांपल बीमारियों में जो जड़ी बूटियों का यूज़ करते हैं like herbs to cure the disease, so that knowledge is now disappearing. So it aims to encourage that knowledge, the traditional resource use system. Okay, then it also aims at understanding the patterns and processes of functioning of the ecosystem कैसे function करते हैं, क्या processes होती है, उनको समझने के लिए भी they have been established. And the another function is that to monitor the natural and human caused changes on spatial and temporal scales. Okay, so जो changes हो रहे हैं
particularly caused by the humans. So उसका जो spatial and temporal scale पे क्या changes आ रहे हैं. Okay, so these are the functions of establishing biosphere reserve from the conservation point of view. Next is the development point of view. So these biosphere reserves, they aim at to promote at the local level what economic development which is culturally, socially and ecologically sustainable. Okay, so we can say that these biosphere reserves are aimed at achieving the sustainable development, okay, or economic development in a sustainable manner. And it is also aimed at develop the strategies leading to the improvement and management of natural resources. And next is the logistical support, to provide support for research, monitoring, education and information exchange related to the local, national and global issues of conservation and development. Okay, so international level पे, national level पे और local level पे बायोडाइवर्सिटी का यूज करते हुए किस तरीके से एक नॉलेज क्रिएशन जो होता है कि यानी कि जो कौन कौन सी स्पीसीज है उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है, या फिर उन पे जो पर्टिकुलरली रिसर्च होती है इन ट्रीटिंग द डिजीज वगैरह वगैरह, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश किए जाते हैं. ओके, सो दीज आर द ब्रॉड फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. आई थिंक प्रीलिम्स में इस पे सवाल नहीं बनेगा, बट दे कैन आस्क अ क्वेश्चन इन मेंस, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, व्हाट आर देयर functions. Okay, so now this is very important, National Biosphere Reserve Program. Okay, so in India in 1986 the government established this program, or the initiated this program, National Biosphere Reserve Program. And what was its aim? It aimed to ensure participation of the local inhabitants, okay, जो local लोग जो हैं, for effective management and to devise means of improving livelihood of the local inhabitants through sustainable use. Okay, so जो लोग they are living close to the nature, they are living in the forest areas, etc. Okay, so to enhance their participation in the effective management of the resources as well as to develop means of livelihood, okay, for these local inhabitants through sustainable use. So this was the main aim of this National Biosphere Reserve Program. Other than that, its aims include conserve the diversity and integrity of the plants and animals within the natural ecosystem. Okay, so for example Nilgiri tar हैं, they are found in the Nilgiri hills. So वहाँ पे जो रहने वाले ट्राइब्स हैं, they know how to conserve these species, उनको hunting से बचाना है वगैरह वगैरह. So this National Biosphere Reserve Program aims to conserve the diversity and integrity of the plants and animals. Okay, then they also aim to safeguard genetic diversity. Okay, so there are three types of diversity: species diversity, genetic diversity, and I think one more is ecosystem diversity. So we will cover that in a separate video. But genetic diversity means जो gene pool होता है किसी भी species का, उसको protect करने के लिए which species on which their continuing evolution depends. Okay, so जो कोई भी species होती है उसका evolution जो होता है वो genetic diversity पे depend करता है. Okay, so to protect that, then to provide areas for multifaceted research and monitoring, and also to ensure sustainable use of natural resources through most appropriate technology for the improvement of economic well-being of the local people. So this has been like more or less they are repeated points. So the main purpose is to ensure livelihood to the local people as well as conservation of the diversity as well as integrity of the plant and animals and the natural ecosystem, and also to conserve the genetic and species diversity. Okay, so these are the main focus areas of the National Biosphere Reserve Program. Now there are total 18 biosphere reserves in India, and out of them 11 are included in the world network of biosphere reserve. So वो 11 कौन कौन से हैं we will see in the. उसके पहले देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंड डिजाइन क्या होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का. So there are total 3 areas. One is the core, then there is the buffer zone, and then there is the transition zone. So यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि arrange the following zones of a biosphere reserve from inner towards outer, and then they can give like core, then buffer and this transition zone. Okay, so we should remember this term CBT. Okay, so core, बफर एंड ट्रांजिशन जोन. ओके, सो कोर जोन क्या होता है? कोर जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं दे आर कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड. ओके, सो दे आर कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड. वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी. इट विल बी फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन प्रेशर्स एंड एक्सटर्नल टू द विच ऑल ह्यूमन प्रेशर्स विच आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल कोई नेशनल पार्क है, तो जो नेशनल पार्क है उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है. तो किसी भी नेशनल पार्क जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व का कोर
एरिया हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व. सो जो नोकरेक नेशनल पार्क है दैट बिकम्स द कोर एरिया ऑफ इट. ओके, एंड इट मस्ट कंटेन सुटेबल हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. ओके, इंक्लूडिंग हायर ऑर्डर ऑफ प्रीडेटर्स एंड इट मे कंटेन सम फॉर्म ऑफ एंडेमिज्म. एंडेमिज्म यानी कुछ स्पीसीज जो है वो सिर्फ वहीं पे होती है, कहीं और नहीं होती है. ओके, सो जो कोर जोन है वहाँ पे इट मस्ट बी ए सुटेबल हैबिटेट फॉर न्यूमरस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज. बहुत सारी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज के लिए जो है वो सुटेबल हैबिटेट होना चाहिए, यानी कि सुटेबल लिविंग प्लेस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज द बफर जोन. सो जो कोर जोन के एडजॉइनिंग जो एरिया है दिस इज बफर जोन. एंड यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती है, सारी एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है. सो फॉर एग्जाम्पल इट्स यूजेज एंड एक्टिविटीज आर मैनेज्ड इन वेज दैट प्रोटेक्ट द कोर जोन. ओके, सो जो भी एक्टिविटीज होगी वो उस तरह की होगी, उनका नेचर ऐसा होगा कि दैट प्रोटेक्ट्स द कोर जोन. ओके, सो व्हाट आर दोज एक्टिविटीज, लेट्स सी. दिस इंक्लूड्स द लाइक रिस्टोरेशन, डेमोन्स्ट्रेशन साइट्स फॉर एनहांसिंग वैल्यू एडिशन टू द रिसोर्सेज, लिमिटेड रिक्रिएशन, टूरिज्म, थोड़ा बहुत टूरिज्म अलाउड होता है, फिशिंग एंड ग्रेजिंग which are permitted to reduce its effect on the core zone. Okay, so the aim is to conserve this core zone, not to destroy it. Okay, so for that purpose the areas adjoining to the core are demarcated as buffer zone. और जो लास्ट जो है वो फाइनली है वो ट्रांजिशन जोन. ओके, सो ट्रांजिशन जोन जो है दे आर लाइक वहाँ पे सेटलमेंट्स भी अलाउड होता है, क्रॉपलैंड्स यानी कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं दे आर अलाउड टू ग्रो क्रॉप्स, देन दे आर allowed to manage these forests and these areas for intensive recreation and other economic uses. Okay, for example वहाँ के जो हैं bamboo plantation वगैरह etc etc, all these kind of activities are allowed in the transition zone. Okay, so the activities or particularly the human activities, their extent increases as we move from the core zone to the transition zone. Okay, so these are all the important conceptual things about the biosphere reserves. Now we will about the lists of biosphere reserve and world network of biosphere reserve. Okay, so this is a program. It was constituted in 1997 under the Man and Biosphere program of UNESCO. Okay, so यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है वो कौन से प्रोग्राम के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया. ओके, सो इट इज रिमेंबर 1997 ईयर, इतना जरूरी नहीं है, बट मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. ओके, रिमेंबर दिस MAB. ओके, and it is under the UNESCO. Now across 117 countries, okay, there are around 610 biosphere reserves. लगभग 600 से भी ज़्यादा biosphere reserve है पूरे ग्लोबल लेवल पे, एंड आउट ऑफ देम 12 आर ट्रांसबाउंडरी इन नेचर. फॉर एग्जांपल जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो इंडिया में भी है एंड श्रीलंका में भी है. ओके, एंड दीज that world network of biosphere reserve that promotes north-south as well as south-south collaboration, and it represents a unique tool for international cooperation. Okay, so it's a unique tool for international cooperation among different countries through sharing knowledge and exchanging experiences and building capacity and promoting best practices. Okay, so these are the aim of this program. So out of the total 18, Nilgiri Biosphere Reserve, Gulf of Mannar Biosphere Reserve, Sundarbans, Nanda Devi, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार अमरकंटक, अगस्त्यमाला एंड कंचनजंगा. सो दीज आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. सो वी शुड नो which 11 are included in this list and we should remember their names. Okay, including the states in which they lies. So just remember this list. Now we will cover all the 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन डिटेल. ओके, वहाँ पे कौन कौन सी फेमस स्पीसीज हैं और कौन से एरियाज में हैं, कवर्ड हैं. सो वी विल लुक एट देम. सो फर्स्ट इज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व and Agastyamalai Biosphere Reserve, they are in the Western Ghats. So we have started with the Western Ghats. Okay, because Western Ghats में जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. So जो नीलगिरी हिल्स वाला जो एरिया है वहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है. एंड जो वयानाड, नागरहोल, बंदीपुर, मुडुमलाई एंड नीलाम्बूर एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये जितने भी इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं या जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ये सब जो है वो इसका पार्ट है नीलगिरी का. ओके, और ये जो है वो तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटक तीनों स्टेट्स में एक्सपेंडेड है. एंड जो नीलगिरी टार है यू कैन सी इन द पिक्चर, लायन टेल्ड मकैक यानी कि जो लायन होता है उसके जैसी पूंछ वाला बंदर, एंड टाइगर. सो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है दिस इज फेमस फॉर दीज स्पीसीज, दे आर वेरी फेमस. फॉर एग्जाम्पल नीलगिरी टार जो है वो सिर्फ नीलगिरी हिल्स में होती है, उसके अलावा और कहाँ पे ही नहीं होता है. एंड लायन टेल्ड मकैक जो है वो भी सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है इन इंडिया.
So I think this is a very important biosphere reserve. Then Agastya Malai, it is in the Nayar, Peppara and Shenedurani wildlife sanctuary. Okay, so this is in the Kerala and Tamil Nadu, and it is famous for Asian elephants and Nilgiri tar. Okay, so remember these names: Nayar Wildlife Sanctuary, Peppara Wildlife Sanctuary and Shenduruni Wildlife Sanctuary. And in the previous year UPSC asked this question: which of the following are Agasthyamala Biosphere Reserve? Okay, so here they have given very close and confusing options. For example, one option is that Nayar, Peppara and Shenedurni wildlife sanctuaries and Kalakkad Mudanthurai Tiger Reserve. So Kalakkad Mudanthurai Tiger Reserve, इसका जो है प्रपोजल अप्रूव हो गया है अभी तक, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तब तक देयर वाज नो क्लैरिटी कि ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है या नहीं है. उसके अलावा जो ऑप्शंस थे वो भी काफी क्लोज ऑप्शंस थे. फॉर एग्जांपल मुडुमलाई, सत्यमंगलम, Wayanad Wildlife Sanctuary and Silent Valley National Park. So they are also in the Tamil Nadu and Kerala. But जो ये जो है वो नीलगिरी के ज़्यादा क्लोज हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के. ये जो है वो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व. अदरवाइज जो बाकी हैं, फॉर एग्जांपल दिस पपीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क, सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस. एंड जो कावल टाइगर रिजर्व है, दिस श्री वेंकटेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, दे आर इन आंध्र प्रदेश. ओके, सो UPSC is given very confusing options and that's why it was a very difficult question to, अगर आपको until unless नहीं पता है then it would have been difficult. Okay, because particularly जो A और B option है उनमें काफी confusion हो सकती थी. Then in the Eastern Ghats, so first we covered the 2 biosphere reserves in the Western Ghats. Now one biosphere reserve in the Eastern Ghat. Okay, so as we know कि जो Western Ghat है वहाँ की biodiversity is more rich than the Eastern Ghats. और जो biosphere reserve है that is Seshachalam Hills. It is in Andhra Pradesh and it is famous for this species slender boris. Okay, so you can see it here in this photograph. This is slender boris and this Seshachalam biosphere reserve is famous for it. Okay, so now we can see this is Nilgiri here at the tip of this Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. This is Seshachalam, completely lies in Andhra Pradesh. This is Agasthyamala, lying almost at the southern tip of Indian Peninsula. Okay, and then जो आगे हम दो कवर करेंगे, they are the Gulf of Mannar and Great Nicobar. So this will be under the category of coast and islands. So you can just see a trend here. This is Seshachalam. Among the south वाले जो हैं उसमें this is the northern most, then Nilgiri, then Gulf of Mannar and Agasthyamala. So UPSC जो है वो यहाँ पे इनको north to south arrange करना भी पूछ सकती है. Okay, they can give these names of the 4 biosphere reserve and they can ask कि arrange them in the north to south fashion. So you should be very cautious about it. Next is the eastern coast and the island groups. So as I already told, there are 2 biosphere reserve. One is the Gulf of Mannar. So we know Gulf of Mannar जो तमिल नाडु का जो coast है, that part is called Gulf of Mannar, which joins to the Sri Lanka. So कौन से part they are part of this biosphere reserve? It is the Indian part of the Gulf of Mannar, extending from the Rameswaram island, okay, up to the Kanyakumari coast and up to Sri Lanka. So this is all these areas are included in this Gulf of Mannar and it is in Tamil Nadu, and this is famous for this sea cow. Okay, dugong, it is called dugong. You can see the image of sea cow. So UPSC asked this question about sea cow, that it is a mammal or not. So this is a mammal. Okay, so just remember that this is found in the Indian coast, particularly the Tamil Nadu coast, and it is also found on the western coast of India. Eastern coast में इतना ज़्यादा नहीं है, but अगर ये तमिलनाडु coast जो है यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा density है. Okay, देन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. ओके, सो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं उसमें जो निकोबार वाला जो पार्ट है, यानी कि जो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, दिस इज डिक्लेयर्ड एज बायोस्फीयर रिजर्व and it is famous for the saltwater crocodiles. Okay, so UPSC can ask that which of the following biosphere reserve is famous for saltwater crocodiles, then the answer will become Great Nicobar Island. Next is the ईस्टर्न हिमालयाज एंड द ईस्टर्न हिल्स. सो अभी तक हमने सबसे पहले कवर किए वेस्टर्न घाट्स. उसके बाद में हमने देखे जो ईस्टर्न घाट में एक है शेषाचलम, और देन वी कवर द ईस्टर्न कोस्ट एंड
आइलैंड ग्रुप्स। ओके, सो अब तक जो है वो 5 बायोस्फीयर रिजर्व कवर हो चुके हैं, 2 वेस्टर्न घाट में, एक ईस्टर्न घाट्स में, एंड जो 2 हैं गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे टोटल 5 बायोस्फीयर रिजर्व है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज वेरी रिच इन द बायोडाइवर्सिटी। वहाँ जो फ्लोरा एंड फोना है वो काफ़ी बायोडाइवर्स है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिल्स एंड द हिमालयन माउंटेन्स एंड द particularly high rainfall it receives. So we will go from west to east. Okay, so जो सबसे पहले है नॉर्थ ईस्ट में, that is कंचनजंगा. So it is in the Sikkim and it is part of the Kanchenjunga National Park and it is famous for red panda and snow leopard. So we see that जो हिमालयन रीजन है यहाँ पे जो नेचुरल नेशनल पार्क्स या जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वहाँ पे स्नो लेपर्ड जो वो काफ़ी पाया जाता है. ओके, अदर देन दैट रेड पांडा इज ऑल्सो found in the Kanchenjunga Biosphere Reserve. Next is the Nokrek. So it is in the Meghalaya, Garo Hills, West Garo Hills, and it is also famous for red panda. Then we move towards east. Then we come across Manas. So Manas is in Assam. It is in the Terai region of the rivers, Himalayan rivers, and it is like part of the Manas National Park. It is Manas National Park is part of the मानस बायोस्फीयर रिजर्व. ओके, एंड इट इज लाइक ग्रासलैंड होने की वजह से यहाँ पे पिग्मी हॉग, गोल्डन लंगूर, हिस्पिड हैव, असम रूफ्ड टर्टल, ये सारी स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है. उसके अलावा जो है वो टाइगर एंड एलिफेंट के लिए भी मानस बायोस्फीयर रिजर्व फेमस है. ओके, सो मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो ट्रांसनेशनल है. दिस इज ऑल्सो एक्सपेंडेड इन भूटान एज वेल एज इन इंडिया. सो दिस इज अ ट्रांसनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व, जस्ट रिमेंबर दैट. नेक्स्ट इज डिब्रू साइखोवा. So Dibru Saikhowa National Park is part of that and it is in Assam state. Okay, so it is famous for white-winged wood duck. It is a kind of duck. Then water buffalo, black-breasted parrotbill, tiger and capped langur. So these are all the famous species which is found in this region. Next is the Dihang Dibang. So it is part of the Siang and Dibang Valley. Okay, so जो ब्रह्मपुत्र की जो वैली है जहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है, दिस इज दिहांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर रेड पांडा एटसेट्रा. Although I forgot to mention here, but it is also famous for red panda and other species. So if you want to remember the 5 biosphere reserve in the northeast, there is a very simple acronym. You can remember this like DIDI. So DD. Okay, so one is Dihang Dibang, another one is Dibru Saikhowa. So DIDI का कहना मानो. So का is can be for Kanchenjunga, DIDI का कहना कुछ नहीं है कहना, and मानो is ma for Manas, no for Nokrek. Okay, so you can remember this like दीदी का मानो या दीदी का कहना मानो. So in that manner you can remember all the names of these 5 biosphere reserves in the Eastern Himalayas. Now we move toward the Western Himalayas. So from the Eastern Himalaya we now move towards Western Himalayas. और यहाँ पे जो है वो 2 बायोस्फीयर रिजर्व है. One is in Uttarakhand, another one is in Himachal Pradesh. So Nanda Devi Biosphere Reserve is in Uttarakhand and it is famous for snow leopard and Himalayan black bear. So you can see snow leopard here. They can survive at very low temperatures. And in the as we move towards Himachal Pradesh, this cold desert Biosphere Reserve. So जो पिन वैली नेशनल पार्क है, चंद्रताल एंड सारचू एंड कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस. सो यूपीएससी फॉर एग्जांपल दे आस्क्ड अबाउट सत्यमंगला अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व. इन द सिमिलर फैशन दे कैन ऑल्सो आस्क अबाउट द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की कौन कौन से एरिया जो हैं दे आर पार्ट ऑफ इट, एंड इट इज इन द हिमाचल प्रदेश स्टेट एंड इट इज ऑल्सो फेमस फॉर स्नो लेपर्ड. ओके, सो वी कैन इजीली रिमेंबर कि जो जो हिमालयाज में एग्जिस्टिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, they all are famous for snow leopard, whether it is Kanchenjunga or Nokrek etc. So now we will see all the 18 biosphere reserves. So सबसे पहले we covered the southern most. So southern में we saw about the Nilgiri and Agasthyamala, they are in the western Ghats, Seshachalam eastern Ghats, then Gulf of Mannar and Nicobar. Okay, so यहाँ पे जो ये 5 साउथ वाले थे, फिर उसके बाद में जो है हमने वेस्ट टू ईस्ट हमने देखा था. सबसे पहले कंचनजंगा, देन दिस नोकरेक, देन मानस, दिस इज नोकरेक, दिस इज डिब्रू साइखोवा एंड दिस इज दिहांग दिबांग. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस. देन वी मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न हिमालय. सो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट एंड नंदा देवी.
एंड जो सेंट्रल इंडिया है एंड जो पेनिनसुलर जो सॉरी सेंट्रल इंडिया एंड जो दिस गुजरात रन ऑफ कच्छ, this is Kutch Biosphere Reserve. Then this Panchmadi, Panna and Achanakmar Amarkantak, they are in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, Simlipal in Odisha and Sundarban in the Gangetic Delta. So now we will see about these 5. Okay. So Great Run of Kutch, it is the largest biosphere reserve in India and it is in the Gujarat state and it is famous for Indian wild ass. Okay. So UPSC has also asked about Indian wild ass. Just remember about this. Then Panchmadi in Madhya Pradesh, so it lies in the Satpura range and it is in Madhya Pradesh and it is famous for giant squirrel and flying squirrel. Okay. Next is the Panna. So the catchment area of Ken River is part of this Panna Biosphere Reserve. It is also in the Madhya Pradesh and it is famous for tiger, chittal and chinkara. Next is the Achanakmar Amarkantak. It is also in the this Achanakmar is part of Chhattisgarh and Amarkantak is part of MP. So this is in the Mekala Hills and it is famous for Chosinga, that is four-horned antelope, and it is also famous for this white-rumped vulture. And next is in Odisha, that is Simlipal, so it is famous for Royal Bengal tiger. Okay. And last जो है वो है Gangetic Delta में Sundarban Biosphere Reserve. So it is in the Sundarban Delta. It also lies in both India and Bangladesh. So it is the part of Ganga and Brahmaputra river system. India में जो है वो West Bengal state में है and it is also famous for Royal Bengal tiger. So जो Royal Bengal tiger है उनकी खासियत ये है कि they can swim in the water. So this is very important. So if UPSC asks a statement that Royal Bengal tiger or the tigers they can swim across the water, then you should write as it as true. Okay. Generally we think कि जो tiger होता है वो mammal होता है और it is not able to swim, but no, Royal Bengal tiger can swim across at least 3 kilometers. Okay. So these are all the 18 bioreserves we have also seen in the map. Now I want you people to answer this question: what should be the next topic which we should cover in this environment and biodiversity? For example, we can cover the national parks, और यूपीएससी ने जो नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछे हैं. अदरवाइज वी कैन कवर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके बारे में हम देख सकते हैं. और अदरवाइज वी कैन रीड अबाउट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, बोथ बर्ड्स एंड एनिमल स्पीसीज critically endangered. Okay, so you people give the feedback that which topic we should cover next. Otherwise I'll cover with as per my wishes or my desires. If you people want particular topic, then you please write that in the comment section. Like this video, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.